Hello students, good afternoon and I extend a very warm welcome to all of you. Welcome to our channel Gradeup IAS. So good afternoon, कैसे हैं आप सभी लोग? In case you guys have joined in, just do let me know in the comment section. एक बार फटाफट comment करके बता दीजिएगा so that we can right away start our class. So स्वागत है आप सभी का Gradeup IAS हमारे YouTube चैनल पर और मेरा नाम है नमन जैन. आज के इस बेहतरीन सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर. बहुत ही करंट में चलने वाला टॉपिक है, राइट? आपको पता ही है कि गवर्नमेंट इज बेसिकली ट्राइंग टू बूस्ट द अलाइड सेक्टर्स ऑफ इंडिया. अलाइड किसके सर? सेक्टर्स विच बेसिकली गो विद एग्रीकल्चर, सेक्टर्स जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं. तो इन अलाइड सेक्टर्स को बूस्ट देने की कोशिश है सरकार की और इसी कड़ी में गवर्नमेंट इज बेसिकली कम अप विद गिविंग अ बूस्ट टू द फिशरीज सेक्टर. तो मत्स्य पालन जो है, फिशरीज, इसकी तरफ थोड़ा सा बूस्ट दिया है गवर्नमेंट ने. और लास्ट मंथ 10 सितंबर को गवर्नमेंट ने एक स्कीम, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर उन्होंने खुद ही अनवील की एक नई स्कीम जिसका नाम है प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. सो गुड आफ्टरनून अनु, गुड आफ्टरनून पुष्पा एंड गुड आफ्टरनून रुचि जी. जय हिंद. बिल्कुल. सो आज हम जो है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस स्कीम कॉल्ड एज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. एंड नॉट जस्ट दिस स्कीम, राइट? केवल इसी स्कीम की बात नहीं करूंगा. आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट ब्लू इकोनॉमी टुडे. इसको थोड़ा सा रिलेट करके भी देखेंगे एसडीजी गोल नंबर 14 से, और मेंस का टाइम पीरियड है तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट कैन बी आस्क्ड इन योर मेंस पेपर. ठीक है, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल पूछा जा सकता है. सीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक. चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास की. पर उससे पहले मैं आपको बता दूं दैट यूपीएससी सीएससी 2021 की आपकी प्रिपरेशन के लिए ग्रेडअप बेसिकली इज ट्राइंग टू launch new products also. So we are bringing in daily current affairs class which is at 9 p.m. on every day, right? UPSC मंथन के नाम से रोहन सर basically takes this class, so you can attend this class. Then दिन में 12 बजे, right, 12 p.m. in the day, हिमानी मैम covers the editorials of The Hindu and Indian Express which you can follow religiously, sir, right? This can definitely help you. Other than this, we are also bringing up NCRT, NIOS and IGNU based books per chapters per. We are trying to bring in quizzes for you, right? So you can attempt these quizzes to boost up your score, and we are also bringing a weekly PIB analysis for you. पूरे हफ्ते का जो वीकली एनालिसिस होगा PIB पर, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपमेंट्स होंगे, कमिटीज आएंगी, रिपोर्ट्स आएंगी, जो भी कुछ आएगा, दैट विल बी पुट अंडर दिस वीकली PIB एनालिसिस. एंड वी आर ऑल्सो going to present for you Gradeup Super quiz. Gradeup Super quiz, which is going to be important, which will have important questions from Science Reporter magazine, Down to Earth magazine, Economic Political Weekly. We will have questions from Frontline, PIB, RSTV, Yojana and Kurukshetra. ठीक है. चलिए, इनफैक्ट अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो रिगार्डिंग courses on Gradeup, you can basically call up these numbers 9650052904. चलिए, let's start with our class today. So we are going to deal with the topic प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. न्यूज में है. क्यों है न्यूज में? Because on 10th of September 2020, Prime Minister he digitally launched this scheme. Right? Now what is this scheme going to deal with? किस चीज से डील कर रही है सर स्कीम? अपने आप में एक फ्लैगशिप स्कीम है, मतलब आज तक कभी देखी नहीं गई सेक्टर में, राइट? एंड दिस इज गोइंग टू फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर इन द कंट्री. सो आई एम श्योर यू हैव हर्ड दैट इंडिया हैज समवेयर क्लोज टू अ वेरी वास्ट कोस्ट लाइन, है ना? 7500 किलोमीटर की हमारी जो है एक वास्ट कोस्ट लाइन है, और इस कोस्ट लाइन, राइट, को हमने अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किया है. इनफैक्ट वी हैव नॉट इवन एक्सप्लॉइटेड द मरीन रिसोर्सेज दैट वी हैव विद इन द कंट्री. जो हमारी रिवरीन्स हैं, इनको भी हमने अभी तक पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं किया है, राइट? अब देखिए, इसमें दो एस्पेक्ट हैं.
there are two aspects here. The first aspect is that we can basically go for only economic development, where we completely exhaust the fishery sector in our country, right? पूरी तरीके से जो है उसको कमर्शलाइज कर दें और पूरी तरीके से इसको खत्म कर दिया देंगे, राइट? पर ये अपने आप में दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी सस्टेनेबल मेथड. This will not be a sustainable method, and thereby going by the SDG goal number 14, Sustainable Development Goal number 14, which deals with your life underwater, we want to proceed, right? We want to exploit the fisheries sector, but in a very sustainable manner, which means we want to give time period also, right, for these fisheries to develop and churn out, right, the amount of fishes which can be sold, which can be regenerated naturally also, and we can exploit a bit of these resources in a very sustainable manner, right? So environment को damage भी नहीं करना चाहते, right? We don't want to pollute our rivers or the seas or the oceans, and we also want to move ahead economically, right? So this scheme will have a time period of 5 years. 5 साल का समय सीमा होगी, समय अवधि होगी इसकी, from financial year 2021 to financial year 2024-25, 5 साल, right? And the scheme will be more like a very focused scheme. और किस पर फोकस कर रहा है सर? फॉर एग्जाम्पल अगर ये आप डायग्राम ही देखें तो अपने आप में क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पर फोकस करेगा, राइट? विच मीन्स वी विल नॉट हैव आइसोलेटेड फिशरीज, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बहुत लोकलाइज लेवल पे एक फार्मर को पैसा देके लोकलाइज फिशरीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं. We are trying to consolidate the fisheries sector by going for cluster-based approach. Cluster-based approach में outcome जो होगा या product होगा उसका volume बहुत ज़्यादा होगा. And due to this, the background and foreground linkages, right? Backward linkages भी develop होंगे, and even the markets, which means industries, they will start growing within these regions. And like the good part about fisheries sector is that there is a huge market in the Southeast Asia for fisheries, right, which India can tap into. So this is going to have two separate components. One is going to be purely central sector scheme and another will be centrally sponsored scheme, right? तो आपको पता है ये डिफरेंस क्या है दोनों में. सेंट्रल सेक्टर स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल कंट्रीब्यूट, सेंटर इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट 100% of the funds, and in centrally sponsored there will be a sharing percentage between state and the center. Now under the central sector scheme component, government has earmarked 1720 crores, and under centrally sponsored scheme government has earmarked 18,330 crores. And Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana scheme is going to primarily focus on adopting cluster or area based approach, right, for the creation of fisheries and clusters through background and forward linkages. वही मैंने आपको बताया ना, that we are going to focus on entire area, develop fisheries to the extent that it is commercially feasible to have more and more industries with respect to background and backward or as well as forward linkages. मतलब प्रोसेसिंग भी अपने आप यहीं पर आ जाएंगी इंडस्ट्रीज, और बैकग्राउंड में, राइट, एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए जो आपको कंपनी चाहिए या आपको जो इक्विपमेंट चाहिए, टू प्रोवाइड दैट इक्विपमेंट, दीज कंपनीज विल आल्सो स्टार्ट फ्लरिशिंग इन दीज रीजन्स, राइट? चलिए, सो कुछ इस तरह का हमारा प्लान है, राइट, कि पूरे एरिया में ऐसे हम जो है ये ट्रैप्स बेसिकली प्लेस करें और इसके अंदर ही बेसिकली पूरा का पूरा जो है फिशरीज का डेवलपमेंट किया जाता है, राइट? अच्छा, बाय द वे, इफ यू वांट टू लुक इनटू दीज कंपोनेंट्स, ये होता क्या क्या एग्जैक्टली, तो ये डायग्राम है मेरे पास, राइट? सो दिस इज बेसिकली अ फ्लोटिंग ग्रिड. दिस इज मोर लाइक अ फ्लोटिंग ग्रिड, ठीक है? केज की तरह से है, और इसके अंदर फिशेस को, ठीक है, जर्म प्लाज्म्स जो है वो छोड़े जाते हैं, जर्म प्लाज्म विच आर बेसिकली गोइंग टू ब्रीड इन, राइट? ब्रीडिंग कराई जाएगी, फीड दी जाएगी. सो दिस गोइंग टू बी अ फीड पाइप, राइट, through which feed will be provided, and by the use of nutrients and feed, fishes will be cultivated here, grow कराया जाएगा पूरा का पूरा culture, right? And then at an appropriate age, at an appropriate time, we can basically utilize these fishes, right? We can basically harness them. एक particular size हो जाएगा तो basically harness करके इसको जो है हम we can commercially exploit it, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट आते हैं हम एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है. जैसा कि सर स्कीम बहुत क्लियरली दिखा रही है, बता रही है, राइट?
The objective is that because we have underutilized our fisheries sector or marine resources, we want to harness the full potential of fisheries in a very sustainable and responsible manner, right? And the approach is that rather than going for, I mean, fisheries in a very traditional format that we used to, right? पूरा तमिलनाडु coast के आसपास देखें तो बहुत traditional manner में we used to have these boats and fishermen used to go into the seas. Rather than having that kind of approach, right, where fishermen's income was very low through that method, and we used to always have these issues with neighbors also, right? That neighbors were basically farming, they were also, I mean, taking their vessels and they were entering into Indian territories and fishing in our territories, right? Economically exclusive economic zones. So instead of doing all of that, we are basically going to develop the marine sector within these closed areas, and then we are going to commercially exploit them, right? तो इससे होगा क्या? This is going to be a very equitable approach, right? For example, let's say we take up a village, एक पूरा पूरा ग्राम ले लेते हैं, पूरा पूरा village ले लेते हैं, and there we are going to set up nearby, let's say five or six of these cages, and we are going to develop fisheries there. अब इससे जितना churn out होगा, जिससे इतना generate होगा, this is going to help the people in that village to basically have meaningful livelihood. Then over the period of time, industries will start coming in, which means that will generate more employment within the region, right? Which means this is also going to resolve the problem of rural poverty and the problem of urban poverty also, right? तो पोटेंशियल यही है कि जहां पर एग्रीकल्चर का ज्यादा बूस्ट नहीं है या एग्रीकल्चर जो है फ्लरिश नहीं करता है ऑल द ईयर राउंड, in those areas we can harness these allied sectors, right? So enhancing fish production and productivity through expansion, intensification, diversification and productive utilization of land and water resources is the second aim. Third aim की अगर मैं बात करूं, modernizing, मैंने कहा traditional methods नहीं adopt कर रहे हैं, we are trying to modernize and strengthen the value chain with respect to fisheries and also focus on the post harvest management and quality improvement, right? अगर आप देखें भारत का तो majorly, right, the kind of quality and the kind of value addition that we do with respect to dairy products or animal products, that is at times complained that the kind of hygiene standards that are maintained are very low, due to which the export potential is lost, right? So fisheries sector mein we don't want to repeat the same mistake. We want to make corrections from day one, right? And we are going to focus on the quality improvement here, right? Then next we are going to focus on doubling fishers and fish farmers incomes and also generation of employment. The next aim is going to be enhancing the contribution to agriculture GVA. देखिए एग्रीकल्चर और फिशरी सारा का सारा प्राइमरी सेक्टर में आता है, राइट? नाउ वी नो दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एग्रीकल्चर्स कंट्रीब्यूशन इज डिक्लाइनिंग, राइट? वैल्यू एडिशन कम हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड देयरबाय वी वांट टू रिलाई मोर ऑन अदर अलाइड सेक्टर्स लाइक फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, so that the agricultural GVA gross value addition is sustained somehow, ठीक है? वो जो 17% के आसपास दिखाई देता है उसको जो है हम थोड़ा इंक्रीज करा सकते हैं, so that we can basically move forward in this direction, ठीक है जी? Absolutely. And award funding under IRIDF, बिल्कुल absolutely, that will also come under this. देखिए ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिवली देयर आर मल्टीपल सेक्टर्स, मल्टीपल अप्रोचेस दैट वी आर यूटिलाइजिंग. एक स्कीम डिक्लेयर करने से क्या होगा? एक फोकस्ड अप्रोच लगेगा, राइट? देन सोशल, फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर फिशर्स एंड फिश फार्मर्स एंड robust fisheries management and regulatory framework will also be established under the scheme, right? Next आते हैं intended beneficiary कौन होंगे इसमें? Who is going to be intended beneficiary? So fishers, fish farmers, fish workers, fish vendors, SC, ST women, differently abled persons, fisheries cooperatives and federations, please remember this, fish farmers producer organizations, FFPOs, fisheries development corporations, even big companies and self-help groups, joint liability groups and individual entrepreneurs, they will all be intended beneficiary. मतलब फोकस किस पे है सर? अगर कोई इंडिविजुअली स्टार्ट करना चाहता है इंडिविजुअली भी, और अगर कोई कलेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, दैट पर्सन कैन आल्सो बी द इंटेंडेड बेनिफिशियरी अंडर द स्कीम, ठीक है? नेक्स्ट, other inaugurations or other initiatives that are related to fisheries sector. So I would mention this very important app that has come in, eGopal app. Now this is a very comprehensively breed improvement marketplace. See,
up till now, before this app, there was basically no mechanism to tell the fish farmers that this is basically the vaccination program, or this is how you can diagnose this disease which is breeding into fishes, or other things also. So there was basically no mechanism for information dissemination, right? So what eGopal app has done is that it has basically been that platform through which we are going to provide information to these fish farmers, right? So this is a very comprehensively breed improvement marketplace and information portal, right? For direct use of farmers, and at present, no digital platform was available in the country for farmers managing livestock, including buying and selling of disease-free germplasm. ठीक है? Germplasm क्या होता है सर? Germplasm क्या होता है? ध्यान सुनेगा, right? Germplasms, these are living genetic resources. ध्यान सुनिए प्लीज. Germplasms are living genetic resources. लिविंग जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसको सर अगर आप लोकल भाषा में पूछने जाए तो बेसिकली इसको बीज भी कहते हैं, ठीक है? बीज भी कहते हैं इसको हम. Germplasms are living genetic resources which are maintained for the purpose of animal and even plant breeding. ब्रीड करा सकते हैं आप रिसर्च कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर प्रिजर्वेशन. ठीक है? These are called as germplasms, and a very critical component in germplasms is that it should be disease free. अगर हम diseased germplasm use कर रहे हैं, obviously the output that will be generated will be full of disease, and thereby it will not be fit for human consumption. ठीक है? तो जिस कमर्शियल एंगल से आप उसे एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, जिस कमर्शियल एंगल से आप उसको बेसिकली बेचना चाहते हैं, यूटिलाइज करना चाहते हैं, दैट विल नॉट बी फीजिबल, राइट? और अभी तक कोई ऐप नहीं थी, कोई इंफॉर्मेशन पोर्टल नहीं था, कोई भी इंफॉर्मेशन रिले करने के लिए चैनल नहीं था. सो eGopal ऐप basically comes in very handy as a dissemination information portal, right? So eGopal app will provide solutions to the farmers on all of these aspects, right? Next we come to the aspect of blue economy. ठीक है? So गवर्नमेंट ने बेसिकली लॉन्च किया, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्लू इकोनॉमी 2.0. 1 बेसिकली हो चुका है ना, गवर्नमेंट कह रही है कि 1 तो हो चुका है, वी आर लॉन्चिंग ब्लू इकोनॉमी 2.0. 1.0 कब हुआ सर? 1.0 came under 8th 5-year plan. Please remember this. 8th 5-year plan. एट्थ 5-year प्लान. सो 1880s में हमने डेवलप करने की कोशिश की थी, राइट? वहां पर हमें थोड़ा बहुत ग्रोथ मिला भी था जी. एब्सोल्युटली थरुण किरोत एएस, यस एब्सोल्युटली, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट सर, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ले लीजिए, ये लीजिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम ब्लू इकोनॉमी की तरफ. सो ब्लू इकोनॉमी में जो ब्लू इकोनॉमी 1.0 था इंडिया में, दैट बेसिकली टुक प्लेस इन द 1880s. नाउ वी आर ट्राइंग टू बूस्ट ब्लू इकोनॉमी 2.0, जो अपने आप में सस्टेनेबल है, राइट? इसमें एक सस्टेनेबल वर्ड भी ऐड कर रहे हैं. कहां से आ रहा है वर्ड सस्टेनेबल? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, ब्लू इकोनॉमी इन करंट सिनेरियो इज द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज. जितना भी आपके पास मरीन रिसोर्सेज है, ओशन रिसोर्सेज है, इसको हम यूटिलाइज करना चाहते हैं एक बहुत ही सस्टेनेबल मैनर में फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इंप्रूविंग द लाइवलीहुड्स ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज एंड क्रिएटिंग जॉब्स while also preserving the health of ocean ecosystem. ठीक है? इससे पहले अगर आप देखने जाएं तो ये वाली कहानी नहीं थी, राइट? हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने नहीं जा रहे थे, बट अब जो है करंट सिनेरियो में वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ ओशन इकोसिस्टम. वी डोंट वांट टू क्रिएट इम्बैलेंसेज इन द ओशन इकोसिस्टम, राइट? एंड देयर बाय सर दिस स्कीम कम्स इन वेरी हैंडी. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है ये. So the blue economy encompasses activities like your renewable energy. इसमें renewable energy भी आ जाएगा, right? That we want to exploit tidal waves to generate tidal energy, right? So sustainable marine energy can play a very vital role in social and economic development. Then we also want to develop fisheries here,
right? More revenue, more fish and more fish stock. Then we also want to focus on maritime transport. अब आपको पता है कि maritime जो है वो cheapest होता है, right? As compared to railways, as compared to roadways and as compared to airways, maritime is the cheapest mode of transport, right? और globally अगर आप देखने जाएं तो globally cargo जो है वो maritime के through ही move करता है, right? So 80% of international goods that are traded and transported, they are through the seas, and the value of seaborne trade is expected to double in the next 10 years. मतलब कि potential बहुत ज़्यादा है, right? Potential बहुत ज़्यादा है. The point is we just need to exploit it in a very sustainable manner. ठीक है. फिर इसके अलावा टूरिज्म का भी फोकस आता है. टूरिज्म का भी एस्पेक्ट आता है. Ocean and coastal tourism, this can bring jobs and economic growth in these underdeveloped regions. Then we also need to focus upon the climate change aspect. So impact of climate change on ocean, rising sea levels, coastal erosion, right? Coastal erosion, changing the ocean current patterns, and at the same time oceans being important carbon sink and will help us mitigate climate change. This also needs to be addressed, sir, right? तो हमको acknowledge करना पड़ेगा that there is climate change, there is melting of polar ice caps, right? And somewhere down the line, ocean's level is rising, which is going to subsume land areas in coastal regions, which is going to affect the livelihood of people living in coastal communities. जितने हमारे पास communities रह रही हैं coastal areas में, सारी affect होंगी, ठीक है? Now, India, because it has a very vast coastline, right? Much of these places is also, much of our places are also going to get affected. हमारी coastline में से कुछ regions भी affect होंगे. बांग्लादेश काफी ज़्यादा affect होगा, Maldives affect होगा, right? So इनके लिए कहीं ना कहीं इसको हमें acknowledge करना पड़ेगा that climate change is going to basically be destructive for them, and thereby we need to generate alternatives from today itself. ठीक है. फिर waste management आता है. 80% of the litter in the ocean is from land-based sources. Better waste management on land can help oceans recover, right? इनफैक्ट ये तो आपने देखा ही होगा ना, बीचेस पे अगर आप जाएंगे तो बीचेस पे आपको गंदगी मिलेगी. कैसे है वो? क्योंकि जो हमने फेंका समुद्र के अंदर वो बेसिकली किसी कोस्ट पर हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट? सो वी नीड टू गो फॉर बेटर वेस्टेज मैनेजमेंट एंड वी कांट पोल्यूट आवर ओशियनिक रिसोर्सेज, राइट? चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ ओशन इकोनॉमी वर्सेस ब्लू इकोनॉमी. ठीक है, हम इसको ओशन इकोनॉमी क्यों नहीं कहते? देखिए, द मोमेंट यू से ओशन इकोनॉमी, देयर इज ओनली इकोनॉमिक एंगल हियर. There is only economic angle here. There is no component of environment here. Environment को आप ध्यान में रखते ही नहीं है. But the moment you say blue economy, you integrate the aspect of environment, which is more like green economy, right? तो green economy का अपने आप जो सब पार्ट है वो है आपका blue economy, right? So blue economy, I would say, is a subset of green economy because it encompasses economic growth, right, from marine resources, riverine resources, and also it focuses on the sustainability of the environment. इतना भी डैमेज ना कर दे environment को कि environment recover ही ना कर पाए, right? So ocean economy simply deals with the use of ocean resources and is very strictly aimed at empowering the ocean's economic system. And blue economy, it basically goes beyond ocean economy. एक बड़ा कॉन्सेप्ट है उससे ना, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं है, इसमें एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना है. वी आर ऑल्सो एनकम्पासिंग द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट और द इकोलॉजिकल एस्पेक्ट अलॉन्ग विद इकोनॉमिक एस्पेक्ट, राइट? सो आई वुड से ग्रीन इकोनॉमी के अंडर ही, ग्रीन इकोनॉमी का ही सबसेट अपने अंदर ब्लू इकोनॉमी है. ग्रीन इकोनॉमी है क्या? ग्रीन इकोनॉमी मीन्स यू आर ट्राइंग टू अकोमोडेट द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू बेसिकली to cover up this degradation. मतलब रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्स को वापस उसको अपनी फुल कैपेसिटी में रीइंस्टेट करना, उसको नेचुरली उसको प्रिजर्व करना, उस पर जो रिसोर्सेज खर्च होगी उसको भी अकोमोडेट अगर आप करते हैं, दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द ओशन. सो First Global Conference on Sustainable Blue Economy, it was held on 26 to 28 November 2018 in Nairobi, Kenya. याद रखना है इसको prelims के point of view से. Then Seychelles became the first country in the world to launch sovereign blue bonds. क्या है blue bonds? बिल्कुल similar है green bonds की जैसे, right?
डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है which is being utilized to raise funds for investment into marine resources to preserve ecological resources, right? जो ओशियानिक इकोसिस्टम है उसको प्रिजर्व भी कर रहे हैं और एक्सप्लॉइट भी करना चाहते हैं सस्टेनेबल मैनर में यूजिंग दीज फंड्स. So blue bonds, they are debt instrument issued by the governments, developmental banks, etc. to raise capital from investors to finance marine and ocean-based projects across the globe, right? So blue economy in India, how are the two linked? So obviously बात है कि कंट्री में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक कोस्ट लाइन है, राइट? और कंट्री में पोटेंशियल बहुत हाई है, राइट? The potential to develop this is very high, and thereby we want to develop the concept in our economy also, right? So blue economy in our country comprises 4.1% of India's economy, and blue economy in India is the sum total of economic activities sourced from marine resources. So fisheries, deep sea mining, and offshore oil and gas, they are all parts of blue economy in India, right? And the importance is that ocean covers 3/4 of the Earth's surface and contains 97% of the Earth's water. It represents 99% of the living area on the planet, and oceans are claimed to be the last frontiers of growth and development. Last frontiers of growth and development. In fact, काफी सारा तो अभी तक untapped है, right? पता ही नहीं हमें है क्या. But the immense potential that the oceans present remains to be tapped fully. However, this potential needs to be harnessed in a very balanced manner. Otherwise, this will lead to ecological degradation, right? So we need to harness this in a very balanced manner, where preservation and health of the oceans, they are given the due importance, and along with adherence to United Nations Sustainable Goal number 14. क्या कहता है सर गोल नंबर 14? SDG goal number 14 deals with life underwater. Life underwater, right? Which states conserve and sustainably use the oceans, seas, and marine resources for sustainable development. The ocean-based blue economy is the next sunrise opportunity as well as issue for developmental experts. दोनों ही है सर, opportunity भी है, issue भी है. Opportunity क्यों? If we are able to exploit it, if we are able to utilize it commercially, then we can basically generate a lot of economic activities. But it is also an issue, because if we only go for economic development, economic growth, then maybe we are going to degrade the oceanic resources to the extent that they will not be able to sustain themselves, and this is going to be the next disaster, right? तो वो भी मेंटेन करने की जरूरत है, और इसीलिए कह रहे हैं बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए पूरे काम में, राइट? नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक एंड ट्रेड पोटेंशियल. सो इंडियन ओशन रीजन इज अबंडेंट विद रिसोर्सेज, पर्टिकुलरली इन द सेक्टर ऑफ फिशरीज, एक्वाकल्चर, ओशियन एनर्जी, इसके अलावा सी बेड माइनिंग, राइट, एंड minerals, and provides tremendous economic opportunities to develop marine tourism and shipping activities. Then international relations and security के point of view से this is again important, with the re-emergence of piracy issues and growing importance to secure the oceanic ecosystem. India has been proactively involved in the cooperative agreements with like-minded neighboring countries, right? Biopiracy को भी होल्ड करने के लिए, बायोपायरेसी के अगेंस्ट भी इंडिया जो स्टेप्स ले रहा है. Then we have certain initiatives by Government of India, right? So we have an umbrella scheme by the name of Sagarmala project. अपने आप में एक umbrella scheme है, right? कोस्टल इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए, पूरी तरीके से कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, राइट? देन वी हैव ओ स्मार्ट इनिशिएटिव. ओ स्मार्ट क्या है ये? ओशन सर्विसेज, मॉडलिंग, एप्लीकेशन, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी. Now this is again an umbrella scheme that has been implemented by Ministry of Earth Sciences. Please let me remind you that the tsunami early warning detecting system that you have, tsunami early warning detection system that we have, ये इसी के अंडर है सर, ओ स्मार्ट इनिशिएटिव के अंडर ही है, राइट? So O Smart scheme covers a total of 16 sub-projects which address ocean developmental activities like technology, resources, services, observations and sciences, right?
Then we have integrated coastal management scheme, which focuses on conservation of coastal and marine resources and also providing livelihood opportunities for the coastal communities. Then we have development of coastal economic zones, CEZ, बिल्कुल SEZ की तर्ज पर है, SEZ से inspired है, right? That we want to demarcate these areas, we want to have economic activities in these areas, we want to develop blue economy in these areas, and we may also try and push for exports in these areas, right? On the basis of maybe changes in certain laws and giving certain bit of incentives in terms of taxation, right? तो सागरमाला के अंडर जो है दिस विल बिकम अ microcosm of blue economy where industries and townships that depend on sea they will contribute to the global trade, right, through their exports. The national fisheries policy for promoting blue growth initiative which will again focus on sustainable utilization of fisheries wealth from the marine and other aquatic resources. वही बता रहा हूं मैं, मेंस में बस नाम लिख के हो जाएगा काम, ठीक है? Even if you write one line each, that is more than enough, right? और फाइनली द वेरी रिसेंट स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है? तो क्या क्या इनिशिएटिव है सर? सागरमाला आ गया, ओ स्मार्ट इनिशिएटिव आ गया, मेजरली डील्स टुवर्ड्स द साइंटिफिक अप्रोच, है ना? थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच लेता है ओशन की मॉडलिंग करने में, उसको एप्लीकेशंस रिसोर्सेज को मैप करने में, राइट? और इसमें क्या है, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस थ्रू जियो मैपिंग, राइट? तीसरा आता है इसमें इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, राइट? फिर आता है कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स, फिर आता है हमारे पास नेशनल फिशरीज पॉलिसी, एंड देन फाइनली द सिक्स्थ वन, छठा जो आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है? चलिए, now what is the way forward then, sir? What is the way forward? Now see, in this era of advanced technology, oceans, they are going to become new centers of economic activity. Now oceans, they already account for significant trade and commerce, right? जो ट्रेडिंग वाला एस्पेक्ट है, मरीन जो आपका है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन वाला एस्पेक्ट है, शिपिंग वाला, दैट वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड, राइट? We have also explored the offshore oil and gas resources. We have also explored the fishing resources, right? We have utilized the oceans for undersea cables and tourism. Now, besides these areas, there are other emerging industries like aquaculture, marine biotechnology, ocean energy, seabed mining, now which has the potential to create jobs and spur worldwide economic growth. So, Indian Ocean region needs a sustainable and inclusive framework for international partnerships, right? For example, हमने जापान के साथ पार्टनरशिप किया था with respect to seabed mining, right? So countries in the region, they need to not only coordinate and manage the growing security challenges in the region, but also realize the substantial economic potential in the Indian Ocean area. And India has significantly upped its development efforts in Seychelles, Mauritius, Africa, Sri Lanka. Now, such an approach earmarks a shift from traditional focus on naval operations and anti-piracy efforts to that of environmental protection, national security, infrastructure creation, industrial capacity building, and marine development. So this can basically serve as a very good, I would say, conclusion in your mains answers. That India is basically moving from the traditional approach of looking at the ocean from the point of view of naval exercises and maybe anti-piracy efforts and trading. We are slowly basically moving away towards environmental protection of oceans, right? From the national security point of view, infrastructure development also. Okay. Infrastructure development, marine development, and industrial capacity building. Chali. Now I have some MCQs for you. So try and answer these questions. Very simple, जो पढ़ाया है उसी पर based है. चलिए, बताइए. Question number 1 हमारा है the primary objective of प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना is. Primary objective of प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना is. 4 ऑप्शंस दिए हैं, ABCD: to provide subsidies to farmers, to provide cheaper loans to fishermen, to address the critical gaps in the value chain of fishing, and fourth, to provide pension benefits to fishermen. क्या देना चाह रहे हैं सर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर, क्या करना चाह रहे हैं? Answers please, everyone.
सिंपल है सर। क्या कर रहे हैं हम? वी आर ट्राइंग टू डेवलप द एंटायर फिशरीज सेक्टर, राइट, बाय प्लगिंग इन द क्रिटिकल गैप्स, बाय क्रिएटिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, राइट। तो आंसर क्या होना चाहिए? आइडियली द आंसर शुड बी सी। सी, टू एड्रेस क्रिटिकल गैप्स इन द वैल्यू चेन ऑफ फिशिंग, राइट। The answer should be C, to address critical gaps in the value chain of fishing, right? तो क्या कर रहा है सर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना? Department of Fisheries aims to establish a robust fisheries management framework, and this will address the critical gaps in the value chain, including infra, modernization, traceability, production, productivity, post-harvest management, and quality control. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, ओ स्मार्ट स्कीम इज एसोसिएटेड विद, ओ स्मार्ट स्कीम किससे जुड़ी हुई है? पहला कह रहा है मोबाइल एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड विद 5G रिजीम। सेकंड कह रहा है प्रोसेस ऑफ सुनामी अर्ली वार्निंग। तीसरा कह रहा है डिक्लेरेशन ऑफ ऑरेंज अलर्ट्स एंड लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन इन मेजर इंडियन सिटीज। एंड फोर्थ इट सेज स्टेट ऑफ द आर्ट ऑब्जर्वेटरी एस्टैब्लिश्ड टू स्टडी डार्क साइड ऑफ द मून। ओ स्मार्ट स्कीम किससे जुड़ा हुआ है सर? अगेन वेरी सिंपल सर, वेरी सिंपल। चलिए, वेरी वेरी गुड रुचि। तो रुचि ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। द आंसर इज बी, द आंसर इज बी, प्रोसेस ऑफ सुनामी अर्ली वार्निंग डिटेक्शन, राइट। जवाब बी होना चाहिए इसका, बिल्कुल बी ही है जवाब। एक्सप्लेनेशन अगर देखने जाए, सो ओ स्मार्ट इज ओशन सर्विसेज modeling application resources and technology scheme. The scheme generates and updates information on marine living resources in Indian exclusive economic zone, and Indian Tsunami Early Warning Center is currently serving 25 Indian Ocean countries. 25 देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, 25 countries, and this is being implemented under O Smart scheme. Last and final question, sir. Final question. Which of the following has been matched correctly? हमें जो है 3 सागरमाला के अंडर जो है प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं, पोर्ट्स दे रखे हैं, और आपको राइट हैंड साइड पे स्टेट्स दे रखी हैं। तो आपके पास पहला है कुलाचल पोर्ट, कह रहा है केरला में है। सेकंड कृष्णापट्टनम पोर्ट तमिलनाडु, एंड थर्ड इट सेज मछलीपट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश। आपको बताना है कौन सा पोर्ट किस सिटी में है, कौन सा पोर्ट किस सिटी में है। बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। मछलीपट्टनम तो याद है, मछलीपट्टनम इज अ स्मॉल टाउन, राइट, एक छोटा सा टाउन है सर। तो मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम की कहानी बहुत सिंपल है। यहाँ पे मछलीपट्टनम तो सही मैच कर रखा है इन्होंने, इट इज इन आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही मैच कर रखा है। लेकिन कृष्णापट्टनम पोर्ट जो है वो आपका आंध्र में है। कृष्णापट्टनम पोर्ट इज इन एपी, आंध्र प्रदेश, ठीक है, एंड नॉट इन तमिलनाडु। जबकि कुलाचल पोर्ट जो है वो तमिलनाडु में है एंड नॉट इन केरला, ठीक है। तो हमारे पास जो सही जवाब है इसका वो होगा 3 ओनली। द आंसर शुड बी बी। बिल्कुल, कुलाचल जो है वो तमिलनाडु में, इट इज नॉट इन केरला, ठीक है। तो वही 3 स्टेट्स इसने बेचारे ने घुमा रखा है हमें, ठीक है। चलिए, तो जाते जाते मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो आप जो है किस प्रकार से अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं, ठीक है। सो ग्रेडअप जो है बहुत ही अच्छा फीडबैक सिस्टम हम लेके आए हैं। वी हैव बेसिकली डेवलप्ड अ गूगल फॉर्म हियर, राइट। कमेंट सेक्शन में उसका लिंक भी शेयर कर रखा है, और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा गूगल फॉर्म का। और इस फॉर्म को भर के आप बेसिकली अपना फीडबैक दे सकते हैं, राइट। दिस विल हेल्प अस टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स, राइट। What kind of topics you need, what kind of teaching style do you need, right? So you can help us improvise, you can help us improvise, ठीक है। तो आपसे दरख्वास्त है, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज क्लास का फीडबैक जरूर दीजिए। प्लीज डू फिल अप द फॉर्म, राइट, डू फिल अप द फॉर्म।
the link has been shared in the comment section with you and also in the description of the class. साथ साथ जाते जाते I would like to tell you that you can subscribe to Gradeup Super for 6, 12 or 24 months as per your need, right? Where you basically get unlimited access to all the structured live courses and mock tests that we have. Structured live courses expert faculty के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, जहां पर हम complete doubt resolution करते हैं inside outside the class, right? Inside मतलब लाइव क्लास में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमसे, और जब आप खुद से पढ़ रहे हैं, when you are reading it on your own, you can basically ask your questions on the doubt portal, right? The doubts are referred to the teacher concerned, where teacher concerned resolves your doubt. ठीक है, साथ साथ फुल सिलेबस कवरेज के लिए जाते हैं, और सबसे यूनिक फीचर ग्रेडअप का that it basically provides you with the performance and report card when you attempt these mock tests. तो जब आप ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, आपको बेसिकली पता चलता है कि आप कितना कैसे परफॉर्म कर रहे हैं किस सेगमेंट में, राइट? नाउ इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी विद रिस्पेक्ट टू आवर कोर्सेज एंड platform, you can basically call up these numbers to talk to our education counselors. Now they will hear you out, they will try and understand, and they will try and guide you in the best way possible. ठीक है, तो आपकी सभी क्वेरीज को शांत करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, और जो भी आपका डाउट होगा वो बेसिकली उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे. यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में आपके लिए 5 सेगमेंट्स हम लोग कवर कर रहे हैं. डेली करंट अफेयर्स रोज रात को 9 बजे रोहन त्यागी सर इज बेसिकली ब्रिंगिंग यूपीएससी मंथन डेली करंट अफेयर्स क्लास. फिर डेली एडिटोरियल एनालिसिस लेके आ रही है हिमानी मैम दिन में 12 बजे. साथ साथ एनसीईआरटी एनआईओएस और इग्नू बेस्ड जो क्विजेज हैं वो भी नया ऐड किया हमने फीचर. साथ साथ वीकली पीआईबी एनालिसिस और ग्रेडअप सुपर क्विज लेके आ रहे हैं, जिसमें हम साइंस रिपोर्टर, डाउन टू अर्थ, ईपीडब्ल्यू, फ्रंटलाइन, पीआईबी, आरएसटीवी, योजना, कुरुक्षेत्र मैगजीन से बेस्ड क्वेश्चनर्स आपके लिए बिल्डअप कर रहे हैं, राइट? Currently, we have the following ongoing courses. We have IS 2021 Comprehensive Course for GS Pre-cum-Mains English Batch, IS 2021 Comprehensive Course for GS Pre-cum-Mains Hindi Batch, साथ साथ IS 2020 का मेंस का कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो है ये भी currently ongoing है. I would request students who have taken up classes from us, आप जरूर अटेंड करिए, राइट? This will help you understand how to write answers, and this can basically serve as the guiding light for you. ठीक है, आज की डेट से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से आप जो है अपने आंसर्स जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं किस सब्जेक्ट में, राइट? कौन से टॉपिक्स मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करें, दिस विल आल्सो गाइड यू इन दैट. साथ साथ यूपीएससी ईपीएफओ के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स प्रीलिम्स का यहाँ पर रनिंग है. साथ साथ हमारे एनसीईआरटी के मॉड्यूल्स, राइट? एनसीईआरटी के बैचेस इंग्लिश हिंदी में दोनों ही चल रहे हैं. अभी जो अपकमिंग कोर्सेज है हमारे पास, अपकमिंग कोर्सेज में वी हैव इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स फॉर आईएएस. साथ साथ इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, एनवायरमेंट इकोलॉजी का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, इंडियन पॉलिटी का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, इंडियन नेशनल मूवमेंट का, एंड जनरल साइंस का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स. ये सारे के सारे अपने आप में सब्जेक्ट कोर्सेज हैं. तो आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड की पढ़ाई करनी है या आपको उसके बारे में ही पढ़ना है, राइट? तो आप ये कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं टू गेट अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज. ठीक है, साथ साथ कुछ फ्री सीरीज भी अवेलेबल है ग्रेडअप ऐप पर. IS 2021 के नाम से यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 सीसैट का डिटेल्ड एनालिसिस भी अवेलेबल है. डेली एडिटोरियल एनालिसिस आ रहा है, यूपीएससी मंथन भी इसके साथ साथ अवेलेबल है. ठीक है, साथ साथ हम जो है 2021 के लिए आपका जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए हम लेके आ रहे हैं. एक नई सीरीज भी ऐड करी है इसी वीक से, जिसको आप बेसिकली फॉलो कर सकते हैं. चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर विद मी. आई विल सी यू गाइस सून. टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग. थैंक यू वेरी मच.